So guys, as you know, in the yesterday session, we have started for the video editing. And today we are going to complete our video editing part where we are going to see some advanced options of the video editing. Okay. So students, today we are going to see the further part of our video editing. Okay. Now guys, in the yesterday session, whatever we have done, we have just saved that at the end of the session, right all of you? हम लोग ने उसको सेव किया था. So guys, वो जो सेव किया वो आपको कहाँ पे मिलेगा? That we are मेरे going. वॉइस नहीं आ रही है। ठीक है, मेरा वॉइस नहीं आ रहा है गाइस किसको भी? आ रही है ना? यस Audible, sir. यस आ रही है ना? ओके ओके. So now guys, what you have to do again, you have to open the Wondershare Filmora software and you will get this pop-up. Okay, once you got this pop-up, at the right side you will able to find your project library. Are you able to find here? And here you will find each and everything which you have saved. सेव किया है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा. Okay, now this is the file which we have saved, right, in the yesterday session, 19 June 12 p.m. batch. So you have to double click on it, and whatever you have done in the yesterday session, that will be available for you here guys. आ गया सब लोग को प्रॉपर तरीके से? Okay, now guys, once it has came here, now our first part which we are going to see is that how to add the transitions in the video. Now, do you know what is meant by transitions, all of you? What is meant by transitions? Any guesses? What is meant by transition? कंटिन्यू फॉर्म मध्ये व्हिडिओ तयार करण्यासाठी स्लाइड Guys, दो स्लाइड के बीच में का जो एक्शन होता है उसको हम लोग ट्रांजिशंस बोलते हैं, right? Now in this video we are going to add two transitions. The first transition which we are going to add, it will be between the opener and the video. And the second transition which we are going to add is between the video and the end credit. Okay, in this way we are going to add two transitions. So let's see how to add it. So students, I'm coming on the starting of the video. So you can see here is not visible to me in a proper way. So if it is not visible to you in a proper way, you are going to zoom it from here, right? From here you are going to zoom it, and here it came guys properly. Okay, now we have to go to the transitions option here. You click on all, and here you will find all the transitions whichever you require. Before using it, you can just double click on it and you will see the difference. You can see how it will work. See. Okay, so you can use as per your requirement. Okay, so I will use one simple one. I will use this one. Okay, now I have to use this between the opener and the video, right, all of you? So all of you, please look at how I am dragging and dropping it. So just take it and drop it at the center of the middle of the opener and the video in this way, and leave it. Again, I will show you guys. You have to just take it and drop it between the opener and the video in this way. Now, if you look here. Hello students, Got it, all of welcome you? back to our Google Ads. Each and everyone. Now, in the same way, we have to add the transition between the video and the end credits. So here and here. So I'm just dragging and dropping here in this way, and now see. Bye. Thank you so much. Bye bye and take care. Got it, all of you? Clear है सबको? अस्मिता, अपूर्व, मनीषा, मारिया, रूपाली, भूषण, each and everyone. Clear है ना सब लोग को? Yes or no, guys? Yes. Okay. Now,
The second important thing which we are going to see is to add the audio for the opener and the end credit. Now, if you look, when the opener is running, it is running simple only. There is no audio behind it. Right, all of you? There is no audio behind it. So now my requirement is that the audio must be there for this opener. Opener के लिए क्या रहेगा? एक audio होना चाहिए. Audio. So how you can add the audio for the opener? Now, students, one of the most important thing. If you're not editing to this track, this is the first track of the video. If you're not editing on this track, you have to save it. आपको क्या करना पड़ेगा? उसको लॉक करना पड़ेगा. लॉक सेव नहीं करना पड़ेगा, लॉक करना पड़ेगा. How you're going to lock it? See here is the option only of lock. Just click on it. So now you will not able to edit this track. आप इस track को edit नहीं कर पाओगे. Because what's happened? No, when you are going to edit in the another track, जब भी आप दूसरे track पे edit करने जाते हो, तो कभी कभी आपका जो फर्स्ट ट्रैक है ना, उसमें कुछ तो गलती से चेंजेस हो जाते हैं. तो चेंजेस न होने के लिए आप जिस ट्रैक पे काम नहीं कर रहे हो, उस ट्रैक को आपको लॉक करना है. सो फ्यूचर में वो आपका एडिट नहीं होने वाला है. गेटिंग इट? यस. आफ्टर दैट, नाउ आई विल गो टू द ऑडियो. I will go to the all, and here I will find lots of audios. Okay, so whichever the audio you like it, before using it, again you can double click on it and you can hear the sound. आ रहा है ना आवाज? Yeah. So I like this. So I am going to drag and drop this for the opener here at the starting of the video. See here, but in the audio track, not in the video track. There are two types of track. No, guys, video and audio. So if you're using the audio, drag it in the opener track in this way. See here, and leave it. Now, guys, you just tell me it is proper or not. आ रहा है ना आवाज? ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है, चलेगा, नो प्रॉब्लम, कुछ तो रहता है. बट नाउ व्हाट हैपेंड नो गाइस, मैंने ऑडियो तो डाला, मेरे ओपनर पे ऑडियो तो आ गया है, बट जब भी मेरा वीडियो एक्चुअल वीडियो स्टार्ट होता है, तभी भी ये साउंड आ रहा है सुनाने के लिए. सो इट इज प्रॉपर और नॉट गाइस? प्रॉपर नहीं है. जब भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, माई वीडियो इज गोइंग टू स्टार्ट, उस टाइम ऑडियो बंद होना चाहिए. सो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल रिक्वायर टू कट दी ऑडियो नाउ. कहाँ से कट करोगे? यहाँ से, राइट? तो जहां पे आपको कट करना है, यहाँ पे रखो इस तरह, और इसको कट पे क्लिक करो. हो गया कट. और इस पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दो. समझे? इन द सेम वे आई वांट टू ऐड द ऑडियो एट द एंड ऑफ द क्रेडिट. यहाँ पे डालना है. तो अगेन मैं सेम ऑडियो लेके जहां से क्रेडिट स्टार्ट होता है वहां पे ड्रैग करूंगा, और क्रेडिट यहाँ पे बंद होता है, राइट नो? तो यहाँ पे मैं उसको कट करूंगा. कट इट, इस पे क्लिक करके डिलीट. नाउ इफ आई लुक टू माय वीडियो, वेलकम, प्रॉपर हो गया. और उसी तरह एंड क्रेडिट पे मैं जाता हूँ. Got it, all of you? Each and everyone had how to add the transition and how to add the audio for the opener and the end credit. समझ में आया सब लोग को? इसमें कुछ डाउट्स हैं? चलो, now please go to your laptop and do it practically, each and everything. उसके बाद आगे जाएंगे हम लोग. चलो गाइस, उसको इम्प्लीमेंट करो. कुछ डाउट्स आ गए तो प्लीज लेट मी नो गाइस. सर वो लाइब्रेरी जो कल का किया हुआ है, तो वो सेव किया हुआ कहाँ मेरा है? आपका थोड़ा अलग रहेगा. आपको वापस वो ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ेगा. आपकी स्क्रीन शेयर करो. यहाँ पे लाइब्रेरी को नहीं दिख रहा. आपको इंपोर्ट करना. आप कल का वीडियो डाउनलोड हो गया आपका पूरा? कल का मैंने ये एक जो आपने भेजा था ना, वेरी फर्स्ट रॉ वीडियो, तो वो डाउनलोड किया हो.
नहीं नहीं नहीं, आपने जो एडिटिंग कल किया था ना, उसको आपने हाँ डाउनलोडिंग किया था पूरा। हाँ यस हाँ, तो उसको इंपोर्ट करो यहाँ से, इंपोर्ट मीडिया पे क्लिक करो। हाँ, कहाँ पे डाउनलोड किया था बताओ, डाउनलोडेड वीडियो कहाँ पे है? माझं काम चालू आहे चालेल. उसने इंपोर्ट बोला था सो आई इंपोर्टेड इट. नहीं ना, आपने जो कल वीडियो बनाया था ना, हाँ वो डाउनलोडेड, आपको मैं बोला था ना वो एक्सपोर्ट हो रहा है। वो हाँ सर वो प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी. पर वो कहाँ पे है वही देख रहा हूँ ना, वो वही कहाँ पे है आपके इसमें डेस्कटॉप पे, कहाँ पे वो दिखता है? इसमें तो कुछ नहीं दिख रहा. आई थिंक नहीं हुआ रहेगा आपका पूरा वो, तो आपको हाँ वापस हाँ पड़ेगा अभी। हाँ सर ये है ये. तो आप, फर्स्ट इज दिस वन. नहीं दिख रहा है मुझे। ये माय फर्स्ट वीडियो एडिटिंग ऐसा हाँ, इसको 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 ड्रैग एंड ड्रॉप करो, इससे. ट्रैक में उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करो। वेट है ना सर. हाँ, मैच टू मीडिया। वीडियो पर ये यहाँ पे वो आपने जैसे बोला वो लॉक और ये वीडियो का आता है, फिर ये नीचे वाला जो है वो ऑडियो का रहेगा क्या? ऑडियो का, ट्रैक. यस, राइट हाँ राइट। हाँ ठीक है, ओके ओके सर गॉट इट. स्टूडेंट्स होने के बाद डन कर दो चैट सेक्शन में। Omkar Bhushan here. I have one doubt. यस प्लीज। Uh, Actually, it was internet connection issue. When you're talking about the lock option, right? So video lock. So what is the use of that lock here? Log, the use of log is that, see here, now what's happened now, here are the multiple tracks are here, right? Such as Uh-huh. video track, each and every track is there. If you're not working on this particular track, for example this video track, so you have to log it. So when you log it now, you will not able to edit this, so no one will be able to edit this log track. Okay. What's happened now, whenever, sometimes what happens, whenever you're doing a changes on a second track, Okay. by mistakenly the changes are also be done on the first track. Oh, इसे okay. हो जाता है गलती से, सो फ्यूचर में उसको बहुत परेशानी हो जाती है, अगर गलती से ट्रैक हुआ उसको वापस कंट्रोल ज़ेड करके वापस लेवल पे लेके आना. सो टू नॉट डू दैट, यू हैव टू लॉक दैट पर्टिकुलर ट्रैक इफ यू आर नॉट Okay. डूइंग एनी चेंजेस. Okay. गॉट इट? Yeah, got it. Yeah. Thank you. हॅलो सर. यस. एकदा शेअर स्क्रीन करते चेक करता का? करना. गाइस होने के बाद डन कर दो, मैं वेट कर रहा हूँ सब लोग की डन के लिए, अभी तक बस अप्रूव का हुआ है. Now guys, I hope so till here it is clear to all of you, each and everyone. Bhushan, Asmita, Apur, Yes, Mohammed. Omkar. Yes, very good. Now guys, one of the most important part. Now we have to unlock this track once again, because now we are going to edit on this track. Okay, so just unlock it. And which track you are going to lock now? This track. Why? We are not going to work on this track right now, so we are going to lock it. Okay, now students, if you look to the opener which we have added in our video in the yesterday session, here you will able to write only two texts. Here you will get an option to write only two texts. Now in case my requirement is that I want to write one more text, additional text I want to write it. How I can write it? Right now all of you. So students, what you have to do, you have to double click on an opener which you have added on the video, and from here we was editing, right, in the yesterday session. You have to look to this advanced part. Are you able to see advanced? Click on this advanced and you will get a small pop-up, and this pop-up is all about the opener. This is the advanced part of the opener, and if you look to the bottom, this is the timeline of the opener.
Now, how much elements are here, guys? In the opener, how much elements are there? Any guesses? 2 elements. This is the first element, right? And this element, this is the timeline. This is the timeline of this element. This is the second element, and this is the timeline of the second element. So, जितने आप elements add करोगे in your video, each and every element have their separate timeline. Timeline मतलब क्या होता है guys? कौन से टाइम पे ये पर्टिकुलर एलिमेंट डिस्प्ले होना चाहिए वीडियोस में, राइट? अभी मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एक एक्स्ट्रा टेक्स्ट डालना है, जो भी टेक्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट है. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू इंसर्ट माय वेबसाइट डोमेन. So you can see at the top here, there is an option here T plus. Are you find it T plus? When you click on this option, no, you have got one more option to write it. So once you insert from the left side, you will able to change it. You can just decrease the size. If you want to change the font from here, you can change the font. Want to increase the size of the text from here, bold, Italy, left element, right element, justify, center element. Now, what is this option, guys? This is the line spacing. In Canva, we have seen the line spacing. याद है? ये 2 lines होते हैं, उसके बीच में का space बढ़ाना है. And this is known as letter spacing. Letter spacing means what? Increasing the space between the letters. Now, if you look here, if I make it 10 here, space बढ़ गया, देख रहा? If I make it here 20, see here. So in this way, you can increase the size. Now, if you want to change the color, from here, you will able to change the color. See here. Got it? I want to change this color. You can change it color also. So, but I will keep it same only, this one only. So in this way, you can add the extra text. Now, not guys, extra text only. If you want to add the image on the opener, you can also add it. So here is the option of image. See here. Click on it, and whichever the image you want to add it. For example, I want to add this particular one. आ गया? You are going to decrease the size from here, and you will display wherever you want to display it. Got it? All of you? Now, how much element is there, guys? कितने elements हो गए on the opener? Yes, Susmita, all of you. कितने elements हुए? Unmute करके बोल. 4. Very good, Shraddha. 1, 2, 3, and 4. Now, each and every element have their own timeline. If you look here, this is the timeline of this element. This is the timeline of this. This is this, and this one is this one. Now, once you have done it, we are going to run the timeline. See here, we are going to run the opener. What do you think, guys? Again, I will run it. What do you think, guys? It is proper? Proper है? सर स्लो है थोड़ा सा. क्या स्लो है? ना, उसको बड़ा, उसको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो, उसका टेंशन नहीं है. और क्या क्या राइट है, एक्यूरेट है? थोड़ा सोचो गाइस, थोड़ा सोचो. इट इज एक्यूरेट? सर एक चीज लग रही है जो मुझे लग रही है. हाँ, बोलिए ना. सारे फॉन्ट प्रॉपर उसमें नहीं है. सारे फॉन्ट्स नहीं है ना, एक ही फॉन्ट है. इसका भी सेम फॉन्ट है, इसका भी सेम, इसका भी सेम. गाइस थोड़ा देखो ना, जो पहले 2 एलिमेंट्स थे, दिस वन एंड दिस वन, हाउ इट इज डिस्प्ले किस तरह हो रहा है, और जो नए एलिमेंट्स हम लोग ने डाले हैं और वो किस तरह डिस्प्ले हो रहा है, देखो अभी. लेटर स्पेसिंग का फर्क है सर. स्टूडेंट्स एनिमेशन में आ रहे हैं. फर्स्ट 2 एलिमेंट्स आर कमिंग इन द एनिमेशंस. सी नो, और जो नए एलिमेंट डाले थे वो एनिमेशन में आ रहे हैं? नो, वो डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहे हैं. So now if I want to give the animation for any of the element which I want, I will just click on it.
From here, I will go to the animation, and here I will get lots of animations. So, for example, whichever the animation you want, I want this one, so I will double click on it. दिख रहा है? आ रहा है proper? See here. See here. Getting it? So जो एनिमेशन आपको चाहिए हो आप एनिमेट डाल सकते हो. अभी इसको भी एनिमेट करना है, इस पे क्लिक करो, गो टू द एनिमेशन. जो एनिमेशन आपको चाहिए got it? And now we will run the आ गया प्रॉपर तरीके से. Got it all of you? So in this way you have to add the animate. रूपाली कुछ डाउट है? कंफ्यूजिंग लग रही हो? Yes, sir. I will ask you later. ओके. तो जैसे जो भी आपको एनिमेट डालना है, आप इजीली यू कैन ऐड द एनिमेशंस. ठीक है, क्लियर है? और ये सब होने के बाद आपको सिंपली ओके करना है. ओके, डन. सो इफ यू रन दिस, Welcome back to our Google Ads. क्लियर है यहाँ तक सब लोग को? In this way only I want to add the extra text in the end credit. So again I will double click on it. I will go to the advanced option, and here I will get the option to edit it. I will click on this T plus. I will decrease it, and I will just go to the animation, and whichever the animation I want, I will keep it, and then I will click on OK. So let's see. Got it all of you? Clear है? Now, चलो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस. ऑल ऑफ यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर. अभी थोड़ा एंड क्रेडिट पे देखो. माय एंड क्रेडिट बैकग्राउंड इज इन विच कलर गाइस? इट इज इन द ब्लैक कलर. नाउ इफ आई वांट टू ऐड अ डिफरेंट बैकग्राउंड, or if I want to change the color of the background, how I can do it? Okay, so guys, it is a simple process. Look here, you have to click on OK, and if you go to this media option, in media you will get the option of sample colors, where you will get a ready-made colors here. If you double click on it, you will able to find it. Okay, these are the ready-made colors which you can use it. So I want to display this as a background for the end credit. So now you just tell me, where should I drag and drop this particular background image on the video? कहाँ पे मुझे इसको drag and drop करना पड़ेगा? सोचो. Where should I drag and drop this particular color, जिससे वो मेरे end credit के background पे fit हो जाएगा? Just कहाँ पे डिस्प्ले करूं? Should I display in the second track? क्या यहाँ पे इसके आगे करूं? चलो इसको आगे करके देखते हैं. ओके, Bye bye and take care. मतलब एंड क्रेडिट खत्म होने के बाद वो डिस्प्ले हो रहा है, तो कहाँ पे करना पड़ेगा? Sir, if we overlap with the same ओवरलैप. and ओके, इसको ऊपर लेते हैं, सेकंड ट्रैक में लेते हैं उसको. सेकंड ट्रैक में, सेकंड ट्रैक पे ले लिया. नाउ यू सी. Bye bye and take care.
Why are we taking on the second track? तो कहाँ पे लेना On the पड़ेगा? first track itself. यानी इसको कहाँ पे ले लो? इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर सकते? कैसे मतलब ए ऊपर जाना चाहिए और वो नीचे आना चाहिए, राइट? दोनों एक ही पे नहीं हो सकता. ऐसा होएगा सही से। एक खुशी में दो तीन जन से बैठ सकते हैं। बोलो गैस क्या करना पड़ेगा गैस? और सोचो ना, सिंपल बात है। अभी मैंने जब भी बैकग्राउंड कलर सेकेंड ट्रैक पे डाला तो मेरा एंड क्रेडिट दिख रहा है क्या? टेक्स्ट दिख रहा है क्या मेरा? टेक्स्ट इज विजिबल गाइस? नहीं विजिबल है, राइट? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड शुड बी प्रेजेंट इन द फर्स्ट ट्रैक एंड ये जो एंड क्रेडिट है मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेकेंड ट्रैक। अभी इसको मैं थोड़ा डिलीट करता हूँ यहाँ से, ट्रांजिशन को। ये जो एंड क्रेडिट है उसको थोड़ा मैं साइड में लेता हूँ और इस बैकग्राउंड को मैं थोड़ा नीचे लेता हूँ, ओके? और इस एंड क्रेडिट को मैं ऊपर लेता हूँ। अभी वापस मेरा जो ट्रांजिशन है उसको यहाँ पे ट्रैक कर देता हूँ, ठीक है? अभी देखो, So much. Bye bye and take care. आ गया? मतलब गाइस आपने इस ट्रैक की सिस्टम देखा? ट्रैक के ऊपर जब भी आप डालते हो तभी वो वीडियो पे आता है, नहीं तो साइड में डालने के बाद वो वीडियो पे नहीं आता है। क्लियर है ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरीवन? अभी गाइस मैं आपको एक और क्रिएटिविटी बता देता हूँ। अभी हम लोग ने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर डाला, राइट ऑल ऑफ यू? आप यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं डालोगे। अभी आप क्या करोगे मालूम है? यू विल गो टू दी pixels.com, यहां से आप एक वीडियो लोगे, क्रिएटिविटी कुछ भी सर्च करो, क्रिएटिविटी, ये चाहिए तो ये ले लो। सो आई विल टेक दिस वन, आई विल जस्ट डाउनलोड दिस, और जो बैकग्राउंड कलर था ना उसके जगह पे ए वीडियो आप ड्रैग करोगे तो आपका वीडियो और क्रिएटिविटी हो जाएगी। देखो बैकग्राउंड कलर रिमूव किया मैंने। आई विल गो टू द मीडिया, क्लिक ऑन इंपोर्ट, क्लिक ऑन इंपोर्ट मीडिया फाइल, जो वीडियो डाउनलोड किया उसको सिलेक्ट करके आई हैव अपलोडेड ऑन द फिल्मोरा, इसको सिंपली यहाँ पे मैं ड्रैग ड्रॉप कर देता हूँ, ओके? अभी इसको है ना मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर देता हूँ, इसके आगे की जरूरत नहीं ना अपने को, कट इट, डिलीट। Take care. दिख रहा है गाइस ऑल ऑफ यू, ईच एंड एवरीवन? तो पहले बैकग्राउंड था, तो अब जो चाहिए वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन ऐड द बैकग्राउंड एंड यू कैन मेक योर वीडियो मोर क्रिएटिविटी। समझ में आया गाइस ऑल ऑफ यू? हाउ टू ऐड द एक्स्ट्रा टेक्स्ट एंड हाउ टू चेंज द बैकग्राउंड्स? क्लियर है सबको? कर पाओगे अभी? चलो करो गाइस। एंड गाइस ऐड द वीडियो, हाँ वीडियो ऐड करो, बैकग्राउंड कलर मत डालो, ऐड द वीडियो। सर जो वीडियो हमने मतलब जैसे वो सब कुछ टैक्स वगैरह ट्रांजैक्शन वगैरह मैंने सब कुछ कर लिया, आइकन डाल लिया, जो वीडियो थी वो लास्ट में कहाँ से आपने बोला था कि उसमें जाके करना है? क्या करना है? जो वीडियो ऐड करनी है वो कहाँ से जाके एक्सपोर्ट करनी है, मतलब इंपोर्ट करनी है हमने? हाँ ऊपर ऊपर, हाँ बता देते यहाँ पे देखो, मतलब बाहर का वीडियो आपको अपलोड करना, राइट ना? यहाँ पे मीडिया पे आ जाओ, मीडिया पे टॉप पे, और इंपोर्ट पे क्लिक करके इंपोर्ट मीडिया फाइल, देखा? यस सर, थैंक यू। ओके डन गाइस ऑल ऑफ यू। आगे जाते हैं अभी गाइस, चलो देखो यहाँ पे अभी गाइस हम लोग ने चलो टेक्स्ट तो डाल दिया, अभी मुझे वीडियो के ऊपर टेक्स्ट डालना। आई वांट टू ऐड दी टेक्स्ट ऑन दी वीडियो, ठीक है? तो वो मैं कैसे डाल सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे टेक्स्ट जो डालना है वो यहाँ पे डालना है, मुझे इस मोमेंट पे डालना है। आई वॉन्ट टू इंसर्ट माई नेम। अभी आप कभी भी देखते हो यूट्यूब पे द इंस्ट्रक्टर जो भी वो एक्सप्लेन करता है वीडियोस में, उसके बॉटम में उसका नाम आता है, राइट ऑल ऑफ यू? जो वीडियो के ऊपर होता है। सो आई वॉन्ट टू एडिट दैट पार्ट, आई वॉन्ट टू एड द टेक्स्ट ऑन द वीडियो। सो हाउ यू कैन एड इट, ठीक है?
सो अभी मुझे बताओ गाइस, मैं टेक्स्ट कहाँ पे डालूं? इसी ट्रैक पे डालूं या सेकंड ट्रैक पे डालूं? ऑन विच ट्रैक वी हैव टू ऐड द टेक्स्ट? क्योंकि वीडियो के ऊपर आना चाहिए, तो सेकंड ट्रैक पे डालना पड़ेगा. ओके, सो नाउ टू ऐड द टेक्स्ट you can go to the titles option. In titles, you can go to the lower third options where you will get a ready-made templates. You can double click on it. See. दिख रहा है? So whichever you like it, you are going to just drag and drop that particular text on the video in the second track. At which time do you want to display? That time also you are going to decide. So first decide the time at which time the text must be available. And at that time, just display this mark, guys. उस जगह पे एक mark रख दो. So I have kept the mark here and I want to display the text here. So now I am going to drag and drop my text whichever I want here. Got it? See here. I will double click on it and I will change my name here. दिख रहा है guys सब लोग को? And if you want to animate it, animate कैसे करोगे? यहाँ से भी animation का option है. Go to the advanced and here also you will get the animation option. So there are two ways through which you can animate, guys. Now see guys, my text is available on the Welcome back to our Google video. Ads course. I hope so. दिख रहा है? You have seen our previous video जिसमें हम लोग ने In video the same way, जिधर भी आपको text add करना है, you can easily add the text on the video, but you have to add it on the second track. Okay, all of you. Now let's come to the last part. I want to display my logo throughout the video. मतलब पूरे वीडियो पे मेरा एक लोगो आना चाहिए at the right side corner. So for that, what I will do first, I will click on OK. I will go to the media and first I will upload my logo on a Filmora dashboard. So for that, I will click on import, click on import media file, and whichever the logo I have. So this is my logo. Open it. So now it is available here. Now you tell me guys, where should I drag and drop this logo? जिससे ये लोगो पर्टिकुलर पूरे वीडियो पे आएगा. You tell me guys. सोचो. Just solve it. अपूर्व, भूषण, गीतांजलि, क्या करना पड़ेगा? कहाँ पे आपको ये लोगो डालना पड़ेगा जिससे मेरे पूरे वीडियो पे वो लोगो आ जाए? सर सेकंड ट्रैक पे ही सेकंड ट्रैक पे जैसे कैसे? पूरे वीडियो पे कैसे आएगा? चलो यहाँ पे डाल दियो तो बीच में ये आ रहा है. हाँ तो या We need to go for the third track. very good Bhushan. You have to go to the third track. So click on this plus button and click on a add video track. आ गया. And I'm going to display this logo from where my video is going to start. Okay? Display कर दिया. इस पे double click करो. And this is the full logo which have came. So you have to just decrease the size and you have to display where you have to display it. Okay? Now look. Welcome आ रहा back है? to our Google Ads course. उसके साथ मेरा नाम भी आ रहा है यहाँ पे. You have seen the previous But the logo is gone. लोगो गया. क्या करना पड़ेगा? लोगो तो गया. लोगो तो पूरे वीडियो पे होना चाहिए. कुछ स्ट्रेच करना पड़ेगा. इसका और- स्टेप मतलब इसका ड्यूरेशन बढ़ाना पड़ेगा. सो मेक द कर्सर अवेलेबल हियर एंड उसके पूरे वीडियो पे उस पे सेट कर दो इस तरह. दिख रहा है? अभी यहाँ से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ. जूम आउट कर देता हूँ यहाँ से. दिख गया? एंड नाउ सी. Welcome back to our Google Ads course. इधर भी मैं जाऊंगा ना I अभी. hope ये देखो. इंस्टॉलेशन आपको बढ़ाना है तो आपको ऐप
मतलब नॉर्मल अपलोड कर दिख देता रहा हूँ अभी के लिए। तो पूरे वीडियो पे Uploading this मेरा one. पूरा लोगो और टेक्स्ट इज अवेलेबल. तो जब ये आपका ऐप meet in the next section for the next type of the ad, which is known as shopping ad, and it is the last type of ad. Meanwhile, thank you so much. Bye bye and take care. Got it all of you? Each and everyone. तो इस तरह से आपको एलिमेंट्स डालना है. And now, once your video editing is done, now it's time to download it. How to download it? Click on OK here first and click on export here. Export button is available here. Click on export. Give a name to your video. जो भी आपको नाम देना है. My first video, edited video. Choose the folder where you have to save it. I will give you suggestions. Save it on your desktop only. Desktop and click on select folder and then click on export. And the process will start. Students, this process will take more time. If your video is of more duration, बहुत बड़ा video है, so it will take more time. If your video has a less duration, it will take less time. Got it all of you? Clear है? Can you do this two process? इस दो प्रोसेस को करो और एक्सपोर्ट का स्टार्ट कर दो. चलो डू इट दिस. यस सपोर्ट. सर एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मेरा वो ना मिनिमाइज नहीं हो रहा लोगो. बताओ ना. कहाँ पे लोगो डाला है? ये रहा सर, वन साइड नहीं सॉल्यूशन. नहीं, वीडियो पे कहाँ पे डाला है? वीडियो पे बता दो. वीडियो पे अभी नहीं डाला, वीडियो पे पहले डालना पड़ेगा सर. डालना पड़ेगा ना, डालोगे नहीं तो कैसा रहेगा? चलो वीडियो ड्रैग पे थर्ड पे डाला सर, यहाँ पे डाल छोड़ो. हो डबल गया. क्लिक करो उस पे. ओके, अभी थैंक यू. प्रीव्यू पे जाओ, उसको छोटा करो. हाँ कर दो इसको. So guys, all of you got it, each and everyone? Yes, Rupali, बोलिए ना. Sir, between the opener video and the actual video, if I have to add one more thing, what I need to do then? Theme means what? Template. One more template. One more slide, like the date and everything. Yes, you can do Today's that. what is Look here. Yeah, you have to. First, I am just deleting the transitions and I'm just locking the another tracks. Okay. Now, for example, I will go to the title. I will go to the all. So I want to add this part. Okay. I want to add this part, right? This one. Just drag and drop between here. Now Thank you so much. Bye bye and take care. this is the first. This is the second. And after the video, after this opener, video will start. Got it? Sir, we can only add the title from here they have given. No, Apart no. from that, You can add anything whichever you want. like for- if I have to put a black background and I have to write only in white format only, then Yes. then you can also just- you can go to the all option. You can go to the custom, or you can go only on titles. Mhm. Titles have a black background. See here. Got it? So you can just double click on it. You can change it. Clear? Any further doubts? Mm. आपको कुछ डाउट्स है? नहीं ना? So guys, clear है all of you, each and everyone? सब लोग को clear है? Guys, I will give you one more video today. Okay? अभी ये जो वीडियो रहेगा वो थोड़ा बड़ा रहेगा, उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है. ठीक है?
Guys, whatever I'm giving you now, please do it at your home. That is important for you only. Okay. So just a minute. 12 to 13 मिनट्स का वीडियो है जिसकी लिंक मैंने भेजी है, देखो चैट सेक्शन में, ठीक है। उसको कटिंग जितना भी आज हम लोग ने किया है, जितना भी प्रॉपर वीडियो एडिटिंग किया है, उसको पूरा करना है आपको, ठीक है, ऑल ऑफ यू। तो वीडियो एडिटिंग क्लियर है सबको? कुछ डाउट्स है वीडियो एडिटिंग में? एनीवन इफ आई हैव अ डाउट्स इन वीडियो एडिटिंग प्लीज लेट मी नो। सर अभी वो कुछ मतलब चेंजेस बाकी है तो अभी सेव करेंगे और बाद में उसको हम वापस कर सकते हैं ना मतलब? यस, कल कैसा सेव किया था मालूम है? कल वैसे हाँ सेव, सर, राइट। एक्सपोर्ट मत करो, एक्सपोर्ट करोगे तो नहीं होगा, सेव करो कल जैसा किया था, अच्छा, इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके सर, उसी प्रोजेक्ट में करेंगे तो चलेगा ना सर? चलेगा मतलब चलेगा, उसमें हो अनदर। जाता है। यस यस, ओके ठीक है, थैंक यू सर। यस क्लियर है? कैनवा एंड वीडियो एडिटिंग दोनों क्लियर है? एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यस और नो मुझे बोल दो, मैं जो सिखा रहा हूँ समझ में आ रहा है? यस सर, ओके। आ रहा है ना? मैं तो Yes. समझ में आया, मैं सिखा रहा हूँ और दिमाग के ऊपर से जा रहा है सब लोग। नहीं सर। नहीं, कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक नहीं समझा है, सो यू आर फ्री टू आस्क मी, ठीक है। हाँ, अपूर को नहीं समझा है कौन सा तो टॉपिक? नहीं सर, समझ सब कुछ आ गया। मैं एक्चुअली एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन चाहिए। जैसे हमारे पास कोई वीडियो है, हम्म, ठीक है, सपोज आई एम हैविंग सम वीडियो, जैसे कि आपको पता है मेरा बिजनेस है तो मेरे पास कुछ वीडियोस हैं, मुझे बट उसमें बंदा बात कर रहा है, हाँ मुझे उसकी बात मतलब उसकी वॉइस हटानी है वीडियो में से, आता नहीं है, ओके, वो पॉसिबिलिटीज रहती हैं? होती है ना, वो कैसे कैसे पॉसिबल है सर? बता देता हूँ। अभी इस वीडियो में भी मेरा वॉइस है, राइट? या अभी मुझे यस, वॉइस को नहीं, तो जो वीडियो अपलोड किया उस पर राइट क्लिक करना है आपको, राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे डिटैच ऑडियो करके एक ऑप्शन आता है, डिटैच ऑडियो, उस पर ठीक है। क्लिक करोगे तो वीडियो और ऑडियो सेपरेट हो जाता है। ये देखो नीचे आ गया। अभी अभी मैं इसको डिलीट करूँ, डिलीटेड। अभी जो मेरा वीडियो रन रहेगा उस पर वॉइस नहीं है, समझे? यस सर, तो इजीली आप डिटैच कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। यस मारिया। सर एक पूछती हूँ, जैसे इंस्टा पे हमने अगर खुद का एक आधा रील अपलोड किया रहेगा, तो उसे वापस अगर एडिट करना हो थ्रू फिल्मोरा तो कैसे कर सकते हैं? वो रील पे डालने के पहले आपको पहले देखना, रील पे क्यों डालोगे आप पहले? नहीं, एक्स्ट्रा जो सेव्ड है ऑलरेडी, उसे अगर वापस एडिट करना है तो उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, रील पे जो है ना उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। हाँ। कैसे करते मालूम है रील के वीडियोस डाउनलोड? नहीं। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ इंस्टाग्राम पे, अभी मैं मेरे प्रोफाइल पे आता हूँ। प्रोफाइल पे आने के बाद फॉर एग्जांपल मेरा एक रील रहेगा, चलो एक रील है मेरा, अभी इसको मुझे डाउनलोड करना है, वेबसाइट वर्सेस लैंडिंग पेज। तो मैं क्या करूंगा ना, इसका इसका इस पे क्लिक करके इसकी जो लिंक होती है, इसकी लिंक कौन सी है, कॉपी लिंक पे क्लिक करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं जाके सर्च करूंगा डाउनलोड रील इंस्टाग्राम। इसमें मुझे एक वीडियोस, बहुत सारी देखो, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगे मुझे, वेबसाइट मिले, इस पे क्लिक कर देता हूँ उस वेबसाइट्स पे। यहाँ पे मैंने उस वीडियो को डाल दिया, सर्च पे क्लिक किया, आ गया वीडियो है यहाँ पे, ले देता, Website was इस पे क्लिक करके इसको डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड हो गया, मेरे डेस्कटॉप पे ये वीडियो आ गया। website versus landing page. Website and landing page are the purpose that typically includes the home page about Got it? अभी इसके बाद मैं जाऊंगा फिल्मोरा पे, मीडिया पे जाके इंपोर्ट, यहाँ से इंपोर्ट फाइल करूँ और जो भी वीडियो मेरा मेरे इस पे आ जाएगा, आ गया। और उसको जिधर चाहिए वहाँ पे ड्रैग ऑफ करके जितना एडिट करना है और एडिटिंग कर सकते हैं। ओके, यस यस।
यस मारिया। आप जो सिखा रहे हो समझ में तो आ रहा है सर, हम्म बट मेरा आज नेटवर्क इशू था तो मैं प्रैक्टिस करूंगी। और आपने वो स्काइप के जो लिंक भेजी है सर, उसको साइन अप करने के लिए नहीं नहीं, पहला आपका गेस्ट अकाउंट होना चाहिए। नहीं, पहला आप अकाउंट बनाओ आपका, आपके नाम का, जैसे फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आप अकाउंट बनाते हो। इन द सेम वे यू हैव टू फर्स्ट क्रिएट द अकाउंट, ओके, एंड देन यू हैव टू डू इट, ओके। Now guys, I hope so you have understood the video editing. Now guys, from tomorrow we are going to start for first module of digital marketing, जो है social media marketing, in which we are going to cover 4 platforms: Facebook, Instagram, LinkedIn and Twitter. But from tomorrow we are only going to concentrate on 2 platforms: Facebook and Instagram, okay. So for that reason, there is one requirement, there are few requirements which you should fulfill it. First important thing, your own Facebook account. Students, don't create any duplicate accounts. Again, I'm repeating to you, don't create duplicate account. The account name should be the same name of your Aadhaar card, or which original account name is there, your account, use that only. For practice purpose also, don't create it, guys. It will be more trouble to you. Trust me. If you're going to buy the agency program, in agency program, there is a WhatsApp API part, is the API. Do you know in WhatsApp, there is a green tick mark is coming of new brands. If you want a WhatsApp API, so there are some important guidelines which you have to follow. So for that, you should use the original account only. Okay. The second requirement is that you should have mobile number or the email ID which is not linked with your any of the Instagram account. Mobile number or the email ID which is not linked with your previous Instagram account. Now, for example, if I have my own Instagram account, when I have created this Instagram account, I have attached my mobile number. Okay. So my mobile number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is my mobile number, for example. I will not able to use this mobile number to create new account. So if you use the mobile number, you can use the email ID for creating new account, which we are going to create tomorrow. But at this place, if you have used the email ID, so you can use your own mobile number to create a new account. But I want a mobile number or the email ID which is not linked with your previous Instagram account. Getting it, all of you? Because tomorrow we are going to create the Instagram account, okay? A new account, not your personal account. Yes, Kef? सर पर अगर ऑलरेडी लिंक्ड है तो क्या कर क्या लिंक है? मोबाइल क्या ईमेल आईडी लिंक है? दोनों में से एक ही लिंक रहेगा ना। मोबाइल है। मोबाइल नंबर रहेगा तो ईमेल आईडी यूज करेगी। अच्छा हाँ, दोनों में से एक ही लिंक सर रहेगा। इफ आई फॉरगॉट कि कौन सा था। आप जब भी लॉगिन करते हो तो आप यूजर नेम डालते हो ना, तो उसमें क्या ईमेल आईडी डालते हो, नंबर डालते हो? नहीं, जनरली वी लॉग इन थ्रू मोबाइल ऐप। तो एक काम करो गाइस, कंफ्यूजिंग हुए ना तो डायरेक्टली एक नया ईमेल आईडी बना के ले लो। ओके अच्छा नया ईमेल आईडी बन जाता है। अच्छा सो Yes. नया मेल आईडी बना के फिर नया अकाउंट फेसबुक पे भी है और इंस्टा पे नहीं भी नहीं दो। नहीं नहीं नहीं, ना? बस ईमेल आईडी क्रिएट करो, बाकी का मैं आपको बता दूंगा। अच्छा ओके फेसबुक का अकाउंट है ना, रहने हाँ दो आपका ओरिजिनल। ईमेल आईडी बनाओ, बाद में मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, ठीक है? ओके ओके यस कैफ, हेलो बोलिए ना। सर, मैं बोल रहा था कि नंबर डालना है या ईमेल आईडी डालनी है अकाउंट में? उसी अबाउट में अकाउंट में, फेसबुक अकाउंट में। नहीं, वो कुछ मत करो, आपका आपका अकाउंट है ना फेसबुक का, जी। तो उस वही वही लेके आ जाओ, बाकी कुछ मत करो, बाकी कुछ मत करो। एंड गाइस, एक इम्पोर्टेंट थिंग है, आपको रील बनाना है, खुद के फेस का रील बना के आपको पोस्टिंग भी करनी है। सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है? इनकेस आप शर्माते हो तो थोड़ा शर्म बाजू में रखो, ठीक है? आपको ये 100% करना ही है, ठीक है?
कैसे बनाना है, कैसे शूट करना है, ये सब कुछ मैं बताऊंगा, क्योंकि विदाउट रील आपका बिजनेस नहीं तो आपका क्लाइंट का बिजनेस ग्रो नहीं होएगा। ठीक है, तो जब तक आप नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि रील कैसे बनाते हैं। गेटिंग इट? तो ड्यूरिंग द कोर्स आपको कम से कम 5 रील्स बनाने हैं। ठीक है, सो बी रेडी फॉर दैट। आप शर्माते हो तो थोड़ा 3 महीने के लिए थोड़ा शर्माने का जो है ना पार्ट, वो थोड़ा बाजू में रख थोड़ा। ठीक है, क्लियर है? तो क्योंकि गाइस रील बनाओगे तो इसमें आपकी 3 स्किल मास्टर होने वाली है। पहला कंटेंट मार्केटिंग, सेकंड ऑर्गेनिक मार्केटिंग एंड द थर्ड वीडियो एडिटिंग। ठीक है, 3 स्किल मास्टर होने वाली है, तो सोचो उसके बारे में। ठीक है, ओके। सो गाइस कल मिलते हैं सेम टाइम पे एट 12 o'clock फॉर द फर्दर पार्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, बाय गाइस, ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।